Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today, we embark on a literary journey into the life and works of one of the most influential figures in modernist literature, Virginia Woolf. She is known for her innovative narrative techniques, psychological depth, and the powerful voice in the feminist movement. Woolf stands as a towering figure whose works continue to inspire and challenge readers across the world. As we move through her biography, early life, literary style, and major contributions, we will not only learn about her as a writer but also as a woman navigating the complex social and intellectual climax of early 20th century England. So, her full name is Adelaide Adeline Virginia Stephen Woolf. She was born on 25th January 1882. She was born on 25th January 1982, London, England, and died on 28th March 1941. She was a British author. She was novelist, essayist, publisher, critic. She is known for some few movements like modernism, Bloomsbury Group, feminism. So Virginia Woolf was one of the central figures in the modernist movement in English literature. Her works broke away from traditional Victorian storytelling, focusing instead of on the inner workings of the human mind, subjective experience, and the fluidity of time. Born as Adeline Virginia Stephen Woolf in Kensington, London in 1882. Yes, sorry, she was born in 1882. So 1882 में ये born हुई थी. Virginia Woolf was the daughter of the eminent critic and founding editor of the Dictionary of National Biography, Leslie Stephen and Julia Prinsep. So she was raised by her parents in their literate and well connected household. She was influenced by the Victorian Literary Society and the prominent British intellectuals of her time, including Henry James, George Henry Lewes, and James Russell Lowell. So, Virginia, along with her sister Vanessa, was taught at home, unlike her brothers, who were formally educated at Cambridge. Though she resented this difference, she had free access to her father's immense library from where she learned English literature and classics. After the sudden death of her mother in 1895, the death of her half sister Stella 2 years later, Virginia suffered depression and several nervous breakdowns. Though her adolescence was traumatic, she studied ancient Greek, Latin, German, and history between 1897 and 1901 at the Ladies Department of King's College, London. Here she connected with some of early reformers of women's higher education. In 1904, the death of her father triggered her nervous breakdowns, and the Stephen children moved to Bloomsbury section of London after Venice and Adrian bought a house there and sold 22 Hyde Park Gate, where while Virginia was recovering. So 2 years later, in 1906, Virginia lost her favorite brother Toby, but this time, instead of slipping into depression, she overcame the loss of Toby and parting with Vanessa. So, who has Vanessa, who had got engaged through writing. Virginia Woolf, along with her other influential and intellectual English writers and artists like Lytton Strachey, Clive Bell, Duncan Grant, Leonard Woolf, David Garnett, and Roger Fry, she formed a group called Bloomsbury Group. In 1912, she married Leonard Woolf. In 1917, Leonard and Virginia together founded the Hogarth Press. Virginia had begun writing in her teens. Her reviews were published anonymously in the Times Literary Supplement and other journals.
The Voyage Out, originally titled Melimbrosia, was her first novel. It was published in 1915 by Duckworth. Virginia developed her art and went on to publish a number of novels, including Night and Day in 1919, Jacob's Room in 1922, Mrs. Dalloway in 1925, To the Lighthouse in 1927, Orlando in 1928, The Ways in 1931, and The Years in 1937. Mrs. Dalloway, which is in our course as well, is one of her best known works. It details a day in the life of Woolf's characters who are trouble and distress in post-war Britain, right? So Virginia's work, Virginia's works have been translated into more than 50 languages. She continues to remain one of the significant writers of 20th century. So this is all about Virginia Woolf's life. अगर हम थोड़ा सा और इनकी अर्ली लाइफ की बात करें तो शी वॉज बॉर्न इनटू अ हाईली इंटेलेक्चुअल एंड लिटरेरी फैमिली. इनके जो फादर थे, सर लेस्ली Stephen, he was an eminent historian. He was an author. He was a critic and known for editing the Dictionary of National Biography. और इनकी जो मदर थी, जूलिया प्रिंसेप Stephen. So she was a renowned beauty and model for pre-Raphaelite painters. She was growing up in such a household. She was surrounded by books, conversations about literature and exposure to art and intellectual thought. इनकी मदर काफ़ी ये जब काफ़ी छोटी थी, सिर्फ 13 ईयर्स की थी, 1895 में, जब ये सिर्फ 13 साल की थी, तब इनकी मदर की डेथ हो गई थी. तो इनके फादर ने दूसरी शादी की और उसी के बाद इनकी जो हाफ सिस्टर थी, इनके फादर ने दूसरी शादी नहीं की थी. इनकी मदर की पहली शादी से, मतलब इनकी मदर की दो शादी हुई थी, उसी से इनको एक और बहन थी स्टेला डकवर्थ, वो भी 2 साल बाद मर गई थी. तो ये जो 2 डेथ हुई इनके घर में, इनकी वजह से इनका चाइल्डहुड काफ़ी ट्रैजिक रहा. सबसे पहले इनकी अपनी मदर, 1895 में इनकी मदर की डेथ हुई. उसी के 2 साल बाद यानी कि 1897 में इनके सिस्टर की डेथ हुई और 1904 में इनके फादर की डेथ हुई. तो ये बहुत ही एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से जो इनका चाइल्डहुड था वो काफ़ी ट्रैजिक रहा. वर्जीनिया डिड नॉट रिसीव फॉर्मल स्कूलिंग इन द ट्रेडिशनल सेंस. Instead, she was educated at home by her father and later attended the Ladies Department of King's College London, where she studied classics and history. अब ये तो था इनका चाइल्डहुड, जो हमने पढ़ा कि क्यों इनका जो इनकी लाइफ थी वो काफ़ी ट्रैजिक रही, इनका चाइल्डहुड काफ़ी ट्रैजिक रहा. अब बात करते हैं इनके लिटरेरी स्टाइल की. सो वर्जीनिया वुल्फ लिटरेरी, or we can say the writing style, is celebrated for its psychological realism, stream of conscious techniques and lyrical prose. तो इनके लिटरेरी स्टाइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मिसेस डैलोवे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है. तो जब हम ये नावल पढ़ेंगे और जब हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया ही है. मतलब इस टॉपिक पर क्वेश्चन आना बहुत ही कंपलसरी है अगर आप मिसेस डैलोवे पढ़ते हैं तो. चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप इंग्लिश ऑनर्स डीयू के स्टूडेंट हो, इस टॉपिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं. सो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वुल्फ वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स जॉयस, राइट, and sought to represent characters' thought in a continuous flow without strict adherence to canonical order. इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ना, मिसेस डैलोवे captures a single day in London yet delves into decades of memories through shifting thoughts. मिसेस डैलोवे सिर्फ एक दिन की कहानी है लेकिन पूरा फ्लैशबैक में है. इस वजह से वो कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन है ही एक दिन की. एक दिन में बैठकर मिसेस डैलोवे अपना पास्ट रिकॉल कर रही हैं.
अगर हम आसान शब्दों में कहें तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक लिटरेरी टेक्निक है जिसमें क्या रहता है कि ये एक तरह का अटेम्प्ट होता है टू कैप्चर द कॉन्टिन्यूअस और ऑफ एंड ऑफन अनस्ट्रक्चर्ड फ्लो ऑफ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग। मतलब एक कैरेक्टर होता है, वो अपनी सोच में एकदम गहरी सोच में डूबा होता है, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्लान के, जो जो उसके माइंड में आता है वो सब नरेटर लिखता है। मतलब एक फ़्लो, जैसे स्ट्रीम है ना, स्ट्रीम मतलब एक फ़्लो में बहती है स्ट्रीम कॉन्शियसनेस की। मतलब एक के बाद एक सोच जो कैरेक्टर उसके मन में आती रहती है और नरेटर उसको लिखता रहता है। So it's like a technique, it's a literary technique that attempts to capture the continuous and often it is unstructured flow of characters, thoughts and feelings. It aims to replicate the way our mind works, incorporating sensory perceptions, memories, and associations alongside conscious thoughts. This style often features interior monologues, fragmented sentences, and the lack of traditional narrative structure to convey a character's psychological state and worldview. So, इसके भी कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं अगर हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को थोड़ा डिटेल में पढ़े तो। जैसे एक होता है इंटीरियर मोनोलॉग। ये एक प्राइमरी तरीका होता है मतलब इस टेक्निक का, जिसको इंटीरियर मोनोलॉग के थ्रू अचीव किया जाता है, जहाँ पर रीडर जो है, द रीडर इज़ प्रिवी टू द कैरेक्टर्स थॉट एज दे ऑकर। एक होता है नॉन लीनियर। ये काफ़ी ट्रेडिशनल नैरेटिव से बहुत अलग है। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो फॉलो नहीं करती लीनियर प्रोग्रेशन ऑफ इवेंट्स को। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोकस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सो वर्जीनिया वुल्फ एक्सप्लोर्ड द इनर लाइव्स ऑफ हर कैरेक्टर्स, ब्लरिंग द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड परसेप्शन। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं they are often less important than interior emotions, right? Third is experimental narrative structure. So Virginia Woolf avoided conventional plots, instead constructed novels around themes, impressions and character consciousness. एक और जो स्टाइल है वर्जीनिया वुल्फ का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म एंड इमेजरी। वर्जीनिया वुल्फ का जो काम है वो उसमें हमेशा मोटिव्स यूज़ होते हैं। जैसे कि मोटिव्स हो गए बेसिकली वाटर, लाइट, वेव्स। तो यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है एज अ सिंबल टू कन्वे डीपर साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल स्टेट्स। अब ये आखिरी एक लिटरेरी स्टाइल है वर्जीनिया वुल्फ का, वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। सो वुल्फ वॉज अमंग द अर्ली राइटर्स टू ओपनली क्वेश्चन द लिमिटेड रोल्स एंड राइट्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा है भी, कि वर्जीनिया वुल्फ अर्ली राइटर्स में से है जो फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ओपनली क्वेश्चंस किया अबाउट द लिमिटेड रोल्स एंड लिमिटेड राइट्स ऑफ अ वुमन इन सोसाइटी। इनका एक ऐसे है अ रूम ऑफ वंस ओन, जो कि 1929 में पब्लिश हुआ था। इट बिकेम फाउंडेशनल फेमिनिस्ट टेक्स्ट। अब आगे बात करते हैं इनके कुछ मेजर टेक्स्ट की। तो इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है टू द लाइट हाउस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ ये 1927 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट सेलिब्रेटेड वर्क्स, a meditation on family, art and passage of time, and set against the backdrop of the Isle of Skye. So this is all about observed across the years at their vacation house on the Isle of Skye. Mrs. Ramsay and her family seek to recapture meaning from the flux of things and the passage of time. To the Lighthouse enacts This novel enacts a moving allegory of the creative consciousness and its momentary triumphs over fleeting material life. जो इनका दूसरा इम्पॉर्टेंट काम है मिसेस डैलोवे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये हमारे कोर्स पे भी है, इसको हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्लास से। इट्स अबाउट अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ क्लैरिसा डैलोवे, using stream of consciousness to explore themes of time, memory and mental illness.
ये 1925 में पब्लिश हुआ था 14 मई को। ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का इंग्लैंड में जो एक हाई क्लास फैमिली के ऊपर है नॉवेल। एक हाई क्लास फैमिली की लेडी है क्लैरिसा डेलवे। ये उसके लाइफ के एक दिन का पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, ठीक है। और नेक्स्ट है द वॉयज आउट। द वॉयज आउट जो पब्लिश हुआ था 1915 में, इसको आप वुल्फ का डेब्यू नॉवल भी कह सकते हो। इट एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। एक इनका और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑरलैंडो। It's a playful, satirical exploration of gender and identity and inspired by Woolf's close friend Vita Sackville West। ये एक बायोग्राफी है और ये 1928 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है द वेस्ट, जो कि 1931 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ हाईली एक्सपेरिमेंटल ब्लेंडिंग पोइट्री एंड प्रोज, फॉलो 6 कैरेक्टर्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। इसके अलावा इनके 2 एसेज भी हैं जो काफ़ी फेमस हैं। अ रूम ऑफ वंस ओन, ये 1929 में पब्लिश हुआ था। दिस essay argues that women need financial independence and personal space to create literature. And this essay introduces a concept of Shakespeare's sister as a thought of experiment। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इनका काम है 3 Guineas, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ था। इट्स अ फेमिनिस्ट क्रिटिक ऑफ वॉर एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी। इन सब के अलावा भी इनका काफ़ी काम, वर्जीनिया वुल्फ का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है लिटरेचर में। शी वॉज द को फाउंडर ऑफ होगार्थ प्रेस विद हर हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ, विच पब्लिश्ड वर्क बाय T.S. Eliot। And this press published works by T.S. Eliot, Sigmund Freud and Catherine Mansfield, and she was a central member of the Bloomsbury Group. This is a circle of intellectuals and artists advocating for new ideas in art, literature and politics। वुल्फ का ना मतलब उनकी जो लाइफ थी उसमें बचपन काफ़ी ट्रैजिक था, काफ़ी ट्रॉमेटिक था। तो वुल्फ battled mental illness throughout her life, experiencing recurring episodes of depression and breakdowns. And the pressure of her literary career combined with personal losses and the looming threat of World War II deepened her struggles. On 28 March 1941, when this is the day when she died, she filled her coat pockets with stones and drowned herself in the River Ouse near her home in Sussex. She left poignant letters to her husband and sister, expressing both love and despair. So Woolf's work remained a cornerstone of modernist literature and feminist thought. She paved the way for experimental fiction, and she inspired generations. She inspired generations of women writers to challenge traditional gender roles and literary norms. Today, her books are studied not only for their artistic innovation but also for their deep psychological insight and social critique. Right? She was a celebrated English writer, considering one of the most important modernist of 20th century authors, and also a pioneer in the use of stream of consciousness as a narrative device, right? While she is best known for her novels, especially Mrs. Dalloway and To the Lighthouse, she also wrote pioneer essays on artist theory, literary history, women's writing, and the politics of power. A fine stylist, she experimented with sexual forms of biographical writing, composed painterly short fiction, and sent to her friends and family a lifetime of brilliant letters. She was born as a Virginia Stephen, but she was the child of ideal Victorian parents. Her father and her mother, they belong to a literary family, and she also had a prominent social artistic connection. So
As we close today's session on Virginia Woolf, let us remember that she was not only a literary innovator but also a fearless thinker who reshapes the boundaries of the English novel. Through her stream of consciousness technique, her lyrical prose, and her unflinching portrayal of the human mind, Woolf gave voice to the subtle, often unspoken complexities of the life. She championed the intellectual and creative independence of women, leaving behind works that continue to provoke thought, inspire creativity, and challenge social norms. Her life was a her life was a delicate balance between brilliance and fragility, and yet, despite her personal struggles, she transformed literature forever. As readers, as critics, and scholars, our task is to keep revisiting her works, not only to admire their beauty, but to engage with the questions they raise about identity, gender, time, and consciousness. So, in our next class, we will move forward to explore Mrs. Dalloway, one of her most celebrated novels, where we will see these themes come alive in the fabric of a single day in London. And if you find this lecture helpful, then please don't forget to like, share the video, and subscribe to the channel. Thank you.